आप सब मस्त हैं, आज का दिन एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। प्लीज दोस्तों, वीडियो देखते वक्त लाइक बटन दबाइए। बहुत बार कह चुका हूं आप सभी से कि जितना भी आप प्यारे लोग लाइक बटन दबाएंगे, उतना ही इस वीडियो के ज्यादा लोग तक पहुंचने के चांस हैं। तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन बिफोर यू आस्क अ क्वेश्चन। बाकी आप लोग कैसे हैं, बताइए क्या चल रहा है। पिछला वीडियो जो किया था लाइव मैंने, उस पर काफी अच्छे रिस्पॉन्स आए, लॉट ऑफ कमेंट्स। मैं समझ सकता हूँ कि क्योंकि हम सारे इतने जज्बाती होते हैं व्हेन इट कम्स टू इंडियन क्रिकेट, तो जाहिर सी बात है कि जब एक ऐसी हार के बाद लोगों के अंदर भावनाएं ज्यादा हो जाते हैं। वी लुक फॉर स्केपगोट्स, वी लुक फॉर विलन्स। बट ऐसा नहीं है, मैंने ये कहा था पिछले वीडियो में, ऐसा नहीं है कि एक बड़े हार से, एक रिकॉर्ड हार के बाद, if we have to be honest, it was India's biggest defeat in terms of balls. 234 balls was the margin of defeat, 10 wickets के साथ। पर देखो, ऐसा नहीं है कि टीम एक एक मैच के बाद खराब हो चुकी है। इस साल ऑलरेडी 4 बार दोस्तों भारतीय टीम 350 तक पहुंची है, अच्छे टीम्स के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो ऐसा नहीं है कि बस एक हार के बाद टीम खराब हो चुकी। बट ये तो कहना पड़ेगा कि बैटिंग और बॉलिंग में थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, जो कि मैं मानता हूं अभी भी 6 महीने बचते हैं ओडीआई वर्ल्ड कप तक। बट अगर ये प्रॉब्लम्स समय के साथ ठीक नहीं होंगे, और बैटिंग में अगर मैं बात करूं तो खासकर लेफ्ट आर्म पेस के सामने, तो हाँ, हम कह सकते हैं कि कुछ दिक्कतें आ सकती है टीम के लिए वर्ल्ड कप में। बट देयर आर स्टिल 6 months लेफ्ट। देयर इज वन ओडीआई टुमारो, चेन्नई, जिसके बारे में आज हम बहुत बात करेंगे। आपके सवाल भी लूंगा मैं इस लाइव स्ट्रीम के बीच। Then of course there's the IPL, this is the longest IPL we've seen। और फिर उस आईपीएल के बाद दोस्तों WTC फाइनल है ओवल में, जहां पे रोहित शर्मा की टीम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। उसके बाद टीम वेस्ट इंडीज जाएगी, जहां पे तीनों फॉर्मेट्स में, टेस्ट, वनडे और T20 में, वहां पे वो भी खेलेंगे। देन द न्यू साइकिल स्टार्ट्स। तो तकरीबन मेरे ख्याल से अगर इंडिया एशिया कप की फाइनल तक पहुंचती है, तो आई थिंक देयर आर 12 या 13 वनडे मैचेस लेफ्ट इन दिस साइकिल। काफी है एक वर्ल्ड कप साल में प्लेयर्स को फॉर्म में लाने के लिए। बट सूर्य कुमार यादव, उनके बारे में क्या कहेंगे हम दोस्तों। वैसे ही जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लाइव लाइव स्ट्रीम्स में, सूर्य कुमार यादव के जो 20-21 जो वनडेज हैं, वो सारे मैचेस दोस्तों, वो सारे अपॉर्चुनिटीज, सारे मौके सूर्या को तब मिले हैं जब कोई प्रेफर्ड प्लेयर, कोई फर्स्ट चॉइस प्लेयर या तो इंजर्ड है या तो रेस्टेड है। सूर्य कुमार यादव एक भी ऐसा ओडीआई नहीं खेले हैं जहां बाकी सारे प्लेयर्स फिट हो। हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, विराट कोहली, शिखर धवन, ये सारे प्लेयर्स हैं, तो इनकी जगह नहीं बनती है 11 में। तो उस लिहाज से देखें तो इस सब के ऊपर ये 3 मैचेस दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सूर्य कुमार यादव के लिए। कीपिंग इन माइंड द वर्ल्ड कप, देयर वाज नो श्रेयस अय्यर, जो कि मेरा मानना है कि वो इंडिया के बेस्ट नंबर 4 हैं आजकल। जब वो नहीं थे तो सूर्य के पास बहुत बड़ा मौका था 4 पे आने का। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों मैच में दोस्तों पहली गेंद पे आउट हुए वो। 2 गोल्डन डक, और दोनों बार दोस्तों वही पैटर्न, वही मोड ऑफ डिसमिसल, लेफ्ट आर्म पेस, मिचेल स्टार्क, हाई क्वालिटी इन स्विंगिंग पेस, और दोनों बार सूर्य कुमार यादव गेंद को नहीं समझ पाए और वो LBW हुए golden duck killing. So, obviously not a good time to be Surya Kumar Yadav, who for the past 15, 18 months, in fact, has been doing fantastic things when it comes to the T20I format, but who has failed miserably, I would say, to transform his outstanding T20 form into the one-day format. क्योंकि मुझे याद है पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप के बाद जब इंडिया हारी थी वो सेमीफाइनल, वो भी 10 विकेट से। कहीं ना कहीं हम लोग एक हैबिट बनाते हैं 10 कि जब हारते हैं तो सीधा 10 विकेट से हारते हैं। बट खैर, उस T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम न्यूजीलैंड गई थी, और वहां पे सूर्य कुमार यादव थे वो, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स रेस्टेड थे। देयर वाज नो रोहित, देयर वाज नो विराट, नो केएल राहुल। तो और वहां पे दोस्तों मुझे याद है कि उस समय कुछ 16 वनडेज मेरे ख्याल से के बाद उनकी एवरेज 30-31 के आसपास थी। आज के दिन क्या है, क्योंकि वो न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड में नहीं चले, वो घर पे नहीं चले, अभी 2 गोल्डन डक, उनका एवरेज दोस्तों 25 तक गिर चुका है महज 4 महीनों में। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इट्स अ वेरी वेरी टफ टाइम टू बी सूर्य कुमार यादव। क्या वो कल के मैच खेलेंगे चेन्नई में? मेरा मानना है, जैसे कि मैंने इस सीरीज से पहले कहा था एक लाइव शो पे, कि सूर्य कुमार यादव रन बनाए ना बनाए जो भी है, भारतीय टीम को 3 मैच के लिए सूर्य कुमार यादव को खिलाना चाहिए, जस्ट टू सी वेदर ही कैन बी इंडिया बैकअप नंबर 4। क्योंकि नंबर 4 तो मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर ही है, कायदे से उनका
बनता है 4 पे खेलने का। But so look, he's got two golden ducks. He's been out to Mitchell Stark, top class bowling, top quality spells. हाँ, थोड़े टेक्निकली वीक थे सूर्य कुमार यादव, खासकर दूसरे मैच में जब उनका पैर कहीं और था और उनका बल्ला भी कहीं और से आ रहा था। बट ऑल सेड डन, आई थिंक, उम्मीद करता हूँ कि कल भारतीय टीम एक और बार, एक आखिरी मौका, डेयर आई से, सूर्य कुमार यादव को दे, ताकि वो थोड़े रन बना सके, ताकि थोड़े फॉर्म में आए, थोड़े कॉन्फिडेंस आए। क्योंकि जब श्रेयस अय्यर वापस आएंगे आईपीएल के बाद, तो मेरे ख्याल से स्काई की जगह नहीं बनेगी 11 में। जब रोहित हैं, जब विराट हैं, जब श्रेयस अय्यर हैं, जब केएल राहुल है, हार्दिक पांड्या हैं, शुभमन गिल हैं, तो इनकी जगह अनफॉर्चुनेटली नहीं बनती। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? प्लीज डू ड्रॉप अ कमेंट, ड्रॉप अ लाइक, से हाय कि भाई क्या चल रहा है, और फिर कल के मैच के बारे में हम और बात करेंगे। कल का मैच दोस्तों चेन्नई में है, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई। और जितना भी हम देख चुके हैं पिछले कुछ 4-5 साल में, वहां की ट्रैक थोड़ी स्पिन को फेवर करती है, थोड़ी स्लो और लो रहती है। अक्सर आईपीएल में हमने देखा है कि जब चेन्नई में मैच होता है अपने होम टर्फ पे, तो एम एस धोनी दो नहीं बल्कि तीन तीन स्पिनर्स खिलाते हैं। तो जहां मेरा ये मानना है कि जहां रोहित शर्मा ने गलती करी अ, विशाखापट्टनम मैच में, एक फास्ट बॉलर को, एक पेस बॉलर को, यानी कि शार्दुल ठाकुर को बाहर करके एक और स्पिनर खिलाने का, शायद इस ट्रैक पे तीन स्पिनर्स एक्चुअली बनते हैं। और मैंने कहा भी था एक एक शो में परसों के मैच के बाद, कि आई एम नॉट गोइंग टू बी टू क्रिटिकल ऑफ द बॉलर्स, क्योंकि जब बैट्समैन ने रायता फैलाया, जब टारगेट केवल 117 है, तो आप कितनी अच्छी बॉलिंग करेंगे, आप कितने विकेट्स लेंगे। और जब मिचेल मार्श जैसे धुआंधार बैटिंग बैट्समैन आपके सामने है, तो मुश्किल है। तो आई वोंट बी टू हार्श ऑन द बॉलर्स। We got the first comment of the day from a regular viewer, Ashutosh Bajpai. He's saying, Mohsin Khan, Natarajan, Mukesh Chaudhary, why is the management not using them? Well, because अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पे इंडिया में हम खेलते हैं, हम एशिया में खेलते हैं क्रिकेट, तो आप स्टेटस के तौर पे खेलते हैं। दिस इज व्हाई यू आर सीइंग अ मोहम्मद शामी प्ले, बिकॉज ही इज प्लेड फॉर सो लॉन्ग, ही इज गॉट अ बिग नेम। और फिर जब जसप्रीत बुमराह शायद वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, जब टीम भुवनेश्वर कुमार से आगे निकल चुकी है, तो द टीम वांट्स टू हैव दैट एक्सपीरियंस बॉलर। और शामी जो कि मिड 30s में है, दे सी हिम एज दैट बॉलर। नॉट क्वेश्चनिंग हिज एक्सपीरियंस, बट आई डोंट नो हाउ कंसिस्टेंट मोहम्मद शामी कैन बी in a one-day World Cup year. He's bowled some very good spells. He's taken wickets this year, but just age and fitness को लेकर मुझे थोड़ा सवाल है उनके ऊपर. But I agree with you. Mohsin Khan, definitely they should try him. Natarajan, I don't know what the status is on him. In the brief time we saw him, he did pretty well. He can swing the ball. मुकेश चौधरी तो बहुत ही रॉ है. I think मुकेश चौधरी को काफी टाइम रुकना पड़ेगा, because he looked a bit raw. I know he had a couple of good spells in the IPL, but मुकेश चौधरी को थोड़ा वेट करना पड़ेगा. Killer Knight is saying, sir, any update? Update is that Bumrah is not playing the IPL. Bumrah IPL में नहीं आएंगे. आएंगे तो शायद आखिर तक आएंगे. I think we need to forget about him for the IPL, and let's hope that he gets back at least 2 months before the World Cup, so that he has a good 6 weeks to 2 months of playing whatever international cricket is there. But yeah, as for the IPL, Bumrah is not going to be playing the IPL. He's coming off from surgery. Surgery requires 4 months break, though. He's not playing the IPL. तो हाँ, हम बात कर रहे थे चेन्नई पिच को लेकर. We saw in the last match that Shardul Thakur went out and Akshar Patel came in. Now, Akshar's bowling had no impact because the match was already done. But his 29 not out was again evidence that this guy perhaps needs to be batting higher, because he's a valuable white ball player, we all know. And of course, recently BGT में उन्होंने बहुत अच्छे रन बनाए, 88 की उनकी एवरेज थी. बट क्योंकि चेन्नई पिच ट्रेडिशनली थोड़े लेग स्पिनर्स, लेग ब्रेक, फ्लाइटेड टाइप बॉलर्स को फेवर करती है, is it a case that Kuldeep Yadav once again holds his place? Or will we perhaps see, Chahal come in? I don't think we're going to go as far as to say Kuldeep and Chahal together. Kulcha की जोड़ी शायद ना खेलें उस धीमी चेन्नई पिच के ऊपर. But given the batting cracks, यहाँ पे मैं आप लोग की राय भी जानना चाहूंगा, आप लोग जो जुड़े हैं इस ट्री पर. What do you think? Do you think the Chennai track demands another spinner? And if so, should it not be someone like Washington Sundar who can bowl in the power play, especially in Chennai? उन्हें पता है कि conditions कैसे हैं. ऊपर से he's a very very handy bat, and given the poor power play scores of the Indian team, both in the Mumbai win and that shocking Vishakhapatnam loss, would it not be a good idea to play the other spinner but have it be Washington Sundar who can offer you valuable runs? Because the tail, barring Akshay Patel who has to bat with the tail, नीचे order से run तो नहीं आ रहे. Shami, Siraj,
आप इनसे रन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। कुलदीप चहल, आप इनसे रन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो जब ये मान के चलें कि दोबारा कल के मैच में मिचेल स्टार्क भारतीय टीम की हालत खराब करेगी पावर प्ले के अंदर, would it not be a good idea to bolster the batting with someone like Washington Sundar? Let me know what you think. I think it's a possibility. It would be harsh on someone like Kuldeep to sit out, पर मेरा ये मानना है कि जडेजा आपको चाहिए, अक्षर आपको चाहिए उस चेन्नई पिच पर, और क्योंकि आपको एक और स्लो बॉलर की जरूरत है, why not drop the conventional specialist wrist spinner and try someone like Washington Sundar because of his fielding, his batting, and his bowling. It's a very, very valuable package. Kiran Knight is saying, yes, sir, Sundar should be added in the playing 11 for both ball and bat. Ashutosh saying, playing three spinners can backfire if pitch is flat. Play Sundar in place of Sky if we need more spin. Also, a good point. I just don't think that Chennai wicket is going to be very flat. It starts to get dry and crusty in a T20 match. So in a one-day match, and I think it's been a while since a one-day match was played there. वहाँ पे I think Ashutosh, you're going to definitely need three spinners. But the batting is more problematic. Right now, the spin bowling department is the one department that's working fine. The pace bowling is somewhat problematic, and the batting is the biggest problem. So I don't think it's going to be flat in Chennai as much as we've seen from Chennai tracks. There are runs there. Yes, it can be a high scoring venue. Not sure 350 venue, but it could be a 300, 320 type wicket. But I think spin is going to have a big, big say. So when you are looking at playing a third spinner, why not sort of take the risk, if I can use that word, and go for someone like Washington Sundar, who just like Akshar, just like Jadeja, does not spin the ball a lot, but he can keep runs down. He's a very risk-free bowler, and he can bowl in the power play, which is something you might want to see on that Chennai track. Plus, like we all agree here, he can offer something with the bat. So, ye rahi baat. Can Ishan play at four in place of Sky? Harpreet Singh, he can. There's nothing to say that he cannot. He's batted in the middle order, but if you look at his brief one-day career, Ishan Kishan's majority of success has come when he's opening. That double hundred, that 91 against South Africa. He's got runs opening. But you can also argue that क्योंकि टीम में एक लेफ्टी नहीं है जब ऋषभ पंत नहीं है, there is an argument to play him at number four. But I just think overall picture, Sky is probably being viewed as a more impactful player right now than Ishan Kishan by the Indian team management, which is why they seem so hell bent on playing him. We saw that they played him in a test match, and he didn't do well. So there seems to be some kind of a compulsion to play सूर्य कुमार. Of course, जब आप 18 महीने से T20 आई फॉर्मेट में इतनी शानदार, इतनी लाजवाब बैटिंग करते आए हैं, तो I get where the temptation would be. But as bad as he looked in getting two golden ducks, I would want to see Surya Kumar Yadav get the backing, because like Rohit Sharma said, you need to give players 10 matches to see what they can do. So I think for the time being, at least for tomorrow's match, let's Sky bat at number four, and let's, unfortunate as it will be on Ishan Kishan, he should play. He should just sit out right now. Harpreet Singh. Good question. बाकी और कौन से सवाल है आपके पास, प्लीज आप लोग पूछते रहिए। जब तक कोई नए सवाल आते हैं हम थोड़ी टिप्पणी देते हैं अपनी, क्योंकि मैं फैंटेसी लीग का बहुत बहुत बड़ा फैन हूं। मैं बहुत खेलता हूं, मैं अलग अलग मैचेस, अलग अलग लीग खेलता हूं। तो लेट्स टॉक अबाउट फैंटेसी। इफ वीव सीन वन थिंग फ्रॉम दीज लास्ट टू मैचेस, it is that you should be leaning more towards bowlers. अगर आपके पास शॉन एबट था पिछले मैच में, अगर यहाँ पे कोई फैंटेसी क्रिकेट खेलने वाले इंसान है, तो इट्स वेरी वेरी स्मार्ट ऑफ यू. Mitchell Stark is a must now. You might even want to, if you already not, I did not, you might want to make Mitchell Stark your vice captain. Captain could be a risk because जब आपने दो मैच में 8 विकेट लिए, तो शायद मर्फीज लॉ ये डिक्टेट करता है कि आप नहीं लेंगे आखिरी मैच में. बट आई थिंक अ वाइस कैप्टन फॉर हिम वुड बी वेरी गुड. कैप्टन के तौर पे मिचेल मिचेल मार्श इज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि वो फॉर्म में है. इफ यू फील दैट यू वांट टू गो फॉर एन इंडियन प्लेयर, I think either go for Virat Kohli, who I still think has got some runs left in this series, if he can just respect Stark a bit more, like all the openers should, and get past him. If Virat Kohli can get to the 20th over, I think he has a big score. Otherwise, a very, very safe option on that track would also be Hardik Pandya, क्योंकि वो टॉप सिक्स में बैटिंग करते हैं, बैटिंग उनकी हर मैच में आती है और वो गेम भी डाल सकते हैं. सो फ्रॉम अ फैंटेसी लीग परस्पेक्टिव, इफ यू प्लेइंग ड्रीम 11 या माई सर्कल 11, जो भी आप लोग फैंटेसी ऐप यूज करते हो, I would say definitely keep Stark your vice captain. And for captain, either go for Mitchell Marsh or go for Hardik Pandya on that Chennai wicket. Ashutosh Bajpai keh rahe hain, should Jaiswal be tried at 3 in place of Pujara after WTC final? Pujara 35.
Yes, absolutely. I will agree with the second part, Ashutosh. I've said this on several streams here as well as the other two platforms that I often get called on as an analyst. कि पुजारा से आगे टीम को बढ़नी पड़ेगी because he's been an outstanding servant. You know, he's closing in on 8,000 runs. But yes, there is a new WTC final schedule. माफी चाहूंगा schedule starting, and India need to take some harsh calls of whether they want to spend the next 2 years with players who are in their mid 30s, irrespective of unka status, unka stature kya hai. Because we see in Asia, India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, we often do not know how to farewell के दिग्गज खिलाड़ी को अलविदा कैसा कहना चाहिए. We often struggle here. Pujara could probably play for another year onwards, but if he's struggling overseas and struggling in India, he averaged 28 in the BGT. He's not looking in peak form. It's fantastic that Pujara got to his 100th Test century. It's a landmark that he fully deserves. But should it have happened? Because he was the same Pujara, Ashutosh, was dropped in Jan or Feb of last year for not scoring runs. But he was called back for that fifth rescheduled test match in England only because the match was in England, where for the last 15, last month and a half, maafi chaahunga, Pujara was scoring big runs for Sussex, which included double centuries. But now that you're not playing in England, you know, beyond the WTC final, and you're playing at home, you're playing the West Indies, you're going to South Africa again. Do you feel that Pujara should be in your cycle for 2 years? If yes, then back him. If no, then discard him now before it gets too late. Rahi baat Jaiswal ki, I don't think Jaiswal is going to be a number three fit. His runs come primarily as an opener, and he's young. We've seen it too early. Too many young players are pushed in. Prithvi Shaw थोड़े जल्दी आ गए. ये भी थोड़े जल्दी आ गए. Jaiswal. Let's just take it easy. Perhaps look somewhere else. Look at people. Look at Indian domestic batsmen जो 26 और 28 के बीच में हैं, जो काफी साल तक सफल रह चुके हैं, and probably back someone like them at number three, not someone young like Jaiswal. Killer Knight saying, "Sir, can India should try Akshar or Jadeja at number four?" It's not the first time they've used Jaddu at four before. You could try it, but then what message are you sending to Sky? So फिलहाल आप चार पे एक ही मैच की बात है, एक ही मैच के लिए आप खिलाइए स्काई को. But definitely bat Akshar Patel higher up. You want Jaddu and Akshar batting. Maybe even break in Hardik Pandya, one spot down. Because Hardik Pandya is a fantastic finisher. So I will back him. Maybe just because Akshar's in good form, you may want to try him, but not at four, maybe six. Passionate coder. Thank you for your comment. Mohsin Khan, similar to Zahir Khan. I think Zahir Khan तो उनसे बहुत बहुत आगे के bowlers थे skill wise. But it could be मोहसिन खान शायद एक ऐसे बॉलर हैं जिन्हें अगले 5 साल तक टीम नर्चर करें, बिल्ड करे और एक आध मौका दें. क्योंकि केवल केवल आईपीएल खेलने से तो आपको चांसेस मिल सकते हैं, आपको सिलेक्शन भी हो सकती है आपकी. बट यू नीड टू बी प्लेइंग अ बिट मोर डोमेस्टिक क्रिकेट. बट डेफिनेटली मैं आपकी बात से सहमत हूं. और भी कमेंट आए थे इस स्ट्रीम पर मोहसिन खान को लेके. डेफिनेटली मोहसिन खान शुड बी ट्राइड. जितना भी मैंने उनको देखा है डोमेस्टिक में और आईपीएल में, ही लुक्स अ गुड प्रोस्पेक्ट. Ashutosh Bajpai, playing the front foot in front of left arm seamer seems to be a problem. Is this the case of poor planning? I don't know, Ashutosh. Good question, first of all. I don't know how much of it is poor planning, how much of it is just playing Mitchell Stark, जो कि पिछले दो मैच पे दोस्तों मुझे unplayable लगे. The guy has looked unplayable. You know, he's a terrific one-day bowler. He's got fantastic stats. He could, whenever the time comes for Mitchell Stark to retire, he could end up being arguably Australia's greatest one-day bowler. तो इस बंदे का स्किल लेवल अलग है और जब कंडीशन इन्हें फेवर करती हैं तो it's very very tough. But in regards to your point of poor planning, I said this yesterday on two live streams. I was on the news channel News 9 Plus of TV9 Bharatwash fame, and I was also on Cricket Next. और दोनों शो में मैंने ये कहा था कि क्यों क्रंच नॉकआउट मैचेस में, चाहे वो WTC फाइनल हो 2021 का या 2019 का वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल या फिर 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल या फिर T20 आई वर्ल्ड कप का पहला मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, क्यों इन बड़े बड़े क्रंच मैचेस पे लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने हमारी टीम बैट्समैन की, माफी चाहूंगा, कि फटती है? क्योंकि ये मेरा मानना है, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में, आप आईपीएल में, आप खुद की स्क्वाड के अंदर क्वालिटी लेफ्ट आर्मर्स को नहीं खेल सकते हो. तो और यू द व्यूअर, जो लोग मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हैं, आशुतोष, अश्विन, किलर नाइट, पैशनेट कोडर, हरप्रीत, आप लोग का क्या लगता है? डू यू नॉट अग्री विथ मी
कि when our batsmen are not playing left armers in the nets day in day out, either as part of their own team or as net bowlers, how are they expected to suddenly rock up in a knockout match and face high quality pace? Be it from Wayne Parnell, be it from Mitchell Stark, be it from Obed McCoy, be it from China Fridi, Trent Bolt, how are they supposed to get better? इसीलिए अगर हमारे पास नटराजन है, अगर हमारे पास मोहसिन है, जो भी है, pick these bowlers either as net bowlers, as traveling net bowlers, or put them in the squad just so they can keep bowling left arm swing, left arm reverse swing, left arm seam to Virat Kohli, to Rohit Sharma, to Shubman Gill, to KL Rahul, to Suryakumar Yadav, जो भी है, अगर आप ये नहीं करोगे तो how do you expect our batsmen to get better? How can they plan for quality left arm pace जब खुद की टीम में या खुद के नेट बॉलर्स के हिस्से क्वालिटी लेफ्ट आर्म पेसर्स नहीं है? अश्विन आर्या, मेरा क्वेश्चन ये है भाई कि आज के T20 बैट्समैन ओनली फ्लैट पिचेस पे ही सक्सेस क्यों होते हैं? जहां बॉल थोड़ा स्विंग हुआ या फिर बॉलिंग फ्री रहा तो गलत शॉट खेल के आउट हो जाते हैं। अच्छा सवाल है अश्विन आर्या भाई, क्योंकि देखिए T20 फॉर्मेट इतना लुक्रेटिव है, कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर, कोई भी लीग ऑर्गेनाइजर ये नहीं चाहते हैं कि इन बड़े बड़े लीग्स के बड़े बड़े पिचेस पर सीम बॉलिंग कंडीशन आए, क्योंकि फिर गेम छोटा हो जाएगा, इनिंग जल्दी खत्म हो जाएगी और गेम पूरे 40 ओवर तक नहीं जा पाएगी। तो इट्स सिंपल इकोनॉमिक्स। T20 मैचेस हालांकि कभी कभी अच्छा होता है, अच्छा लगता है फास्ट बॉलर को डोमिनेट करके, नोबडी, द स्टेक होल्डर्स, द ऑर्गेनाइजर्स, द ब्रॉडकास्टर्स, द स्पॉन्सर्स, दे डू नॉट वांट टू सी अ शॉर्टन T20 मैच। इसीलिए ज्यादातर T20 पिचेस फ्लैट होते हैं, बैटिंग फ्रेंडली होते हैं, बिकॉज द फैन, द स्टेक होल्डर्स, पीपल लाइक टू सी हाई स्कोरिंग मैचेस। अगर छक्के और चौके नहीं लगाएंगे तो फिर DLF मैक्सिमम सिक्स, ये फिलाना स्पॉन्सर्ड बाउंड्री, ये कहां से आएंगे? दिस इज द क्रक्स ऑफ द इशू। अब उसके आगे टेक्निक भी होता है, बिकॉज राइट नाउ व्हेन यू आर नॉट प्लेइंग ऑन सच सेमिंग कंडीशंस, या आप केवल टेस्ट मैच में ऐसे कंडीशन में खेलते हो, अगर आप इंग्लैंड की बात करें या न्यूजीलैंड, और फिर एक आध वनडे मैच में जैसे कि वाइजैग वाला मैच, तो योर टेक्निक विल बी टेस्टेड। इट जस्ट कम्स डाउन टू द डिपेंडेंसी एंड द इन्फ्लक्स ऑफ T20 क्रिकेट ऑन अ बैट्समैन माइंडसेट। आपको एक अलग लेवल का बैट्समैन होना चाहिए, स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, जो कि उन कंडीशंस में ज्यादा खेलते हैं। बेशक लाबुशेन इंडिया के उन्होंने स्ट्रगल किया, but if you have to be a high quality player to be able to counter all three kinds of track, और अफसोस की बात है कि आजकल क्वालिटी सीम ट्रैक्स में नॉट जस्ट इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, इवन इंग्लैंड समटाइम्स, लगभग हर देश के बैट्समैन ऐसे स्विंग बॉलिंग कंडीशन में स्ट्रगल करते हैं। तो इट्स नॉट सो मच अबाउट इंडियन टीम, इट्स अक्रॉस द बोर्ड, जितना भी मैं क्रिकेट को आजकल देखते आया हूं। Killer Knight, sir, is this a bowling friendly pitch or not? Chennai won a Kalka match. It's definitely a bowling friendly track. We've seen fast bowlers do very well there in the IPL. But अगर हम वनडेज की बात करें as well as टेस्ट मैचेस, वहां की पिच थोड़ी धीमी है। It's the loopy, the leg breaks, the Chahals, the Kuldeeps, the Imran Tahirs, इस किस्म के लेग स्पिन bowlers काफी सफल रह चुके हैं चेन्नई विकेट पर। So that's why I said I expect India to once again play three spinners, and even Adam Zampa is going to be a handful on that Chennai track. Passionate coder. India won 2011 World Cup because we had Zahir, 2007 because of Irfan and RP Singh. Absolutely. I've been saying this for the last 10 years. Even when RP was around, even when Irfan was around, when Zahir Khan was around, I kept saying, भाई आपके अगले लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म पेसर्स कहां से आएगा? इंडिया, जब से मैं देख रहा हूं क्रिकेट 94 95 से, मतलब सीरियसली क्रिकेट 95 लीजिए, सीरियसली इंडिया हैव रेयरली हैड लेफ्ट आर्म पेसर्स। जहीर खान एक थे, इरफान पठान एक थे, आरपी कम समय के लिए थे लेकिन इंपैक्ट छोड़ के। इंडिया नीड टू अनअर्थ मोर लेफ्ट आर्म पेसर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ कोर्स सामने वाली टीम को दिक्कत हो सकती है, पर हमारे खुद के बैट्समैन को डे इन डे आउट नेट्स पे लेफ्ट आर्म पेस बॉलर्स खेलना चाहिए, ताकि खुद इनकी गेम डेवलप हो। Ashutosh, Samson or Huda at four? I would prefer Samson because he can float, और अच्छी कीपर भी है, अच्छे फील्डर भी है, लेकिन फिलहाल है कहाँ? उस भाई को यहाँ मौका नहीं मिलता because the team is hell bent on playing Sky. But Ashutosh, to answer your question, between the two, I would say Samson. Huda was probably better suited at three, but he's young, he has time, he could perhaps take that number three role once Virat Kohli moves on from the one day game. तो दोस्तों अच्छा लगा आप लोग से बात करके। I've taken most of your comments. I hope I've taken all your comments. अगर नहीं हुआ तो माफी चाहूंगा। We've discussed combinations, we've discussed permutations, we've discussed the pitch, we've discussed the problems, we've discussed a lot of the past, we've discussed left arm pace, both Mitchell Stark and क्यों हमारे पास ऐसे अच्छे लेफ्ट आर्म पेसर्स नहीं है।
अगले 5 मिनट तक मैं हूँ आपके साथ। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत मजा आता है दोस्तों आपसे बात करके यहाँ पर। प्लीज लाइक बटन दबाइए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आप भी जो व्यूअर्स यहाँ जुड़े हो, आप केवल सब्सक्राइबर्स ही हैं, पर डू पोस्ट सम कमेंट्स कि भाई आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, आप इस टॉपिक के बारे में बात करिए, आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आप उनके बारे में क्या सोचते हो, आप कभी इस समय लाइव आइए, आप इस दिन लाइव आइए। आई ट्राई टू पुट all your suggestions and comments together and try and come up with a slightly more cohesive plan for content, क्योंकि मैं थोड़ा रैंडम हूँ। जब भी मूड होता है या जब भी कोई ख्याल आता है तो या तो मैं लाइव बैठता हूँ आपके साथ, लाइव स्ट्रीम करता हूँ, या तो मैं कुछ प्लान करके, जैसे मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो किया था। वैसे वैसे आपको वो वीडियो कैसे लगा था, जब मैंने देखा था कि फ्यूचर में कौन कौन से प्लेयर्स 100 टेस्ट तक खेल पाएंगे जो आजकल युवा खिलाड़ी हैं? कौन से आजकल की युवा खिलाड़ी हैं जो शायद 10,000 रन तक पहुंचे? किलर नाइन कह रहे सर, अब शायद आपका सेंटेंस रुक गया है, बट मेरे ख्याल से आप दोबारा टाइप करके किलर नाइट अपना नाम बताओ भाई। अगला सवाल का जवाब देने से पहले मैं चाहता हूं आप अपना सही नाम बताइए, पूरा नाम बताइए। Ashutosh Bajpayee, separate white ball and red ball coach. Possible. I think we need to go down that lane. Absolutely. Nehra, yes. Jayawardene, yes. Gautam Gambhir, नहीं. Gautam Gambhir को please दूर रखिए हर चीज से. He's too serious right now. He needs to be a bit more chilled out. Zahir, if Zahir and Jayawardene can be pried away from Mumbai Indians, definitely they could be good coaches. Passionate coder, we don't have a chief selector right now. Don't have one. The search is on. Applicants थे 4-5, पर फिलहाल हमारे पास कोई चीफ सेलेक्टर नहीं है पैशनेट कोडर। बाय द वे, आई आल्सो वांट टू नो योर रियल नेम। पैशनेट कोडर, आपका असली नाम क्या है? और किलर नाइट, आपका असली नाम क्या है? मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ जो यहाँ पे सूडोनिम लगा के आते हैं। आई जस्ट वांट टू नो हु आई एम एक्चुअली टॉकिंग टू। मेरा नाम जेमी ऑल्टर है। मेरा नाम तो आप सब जानते हैं, चैनल में ही मेरा नाम है। क्योंकि मैं अपने रूप में आता हूँ, मैं यहाँ पे फेक इन इंडिया के टिंकू जिया और रिंकू जिया के रूप में नहीं आता हूँ आप सबसे। तो आई लाइक टू नो कि आप लोग का नाम भी क्या है, और ये जो आप सूडोनिम्स यूज करते हैं, ये क्या पेट नेम है, या आप किस चीज में रुचि रखते हो तो आपने ये नाम वहां से उठाया, जैसे कि पैशनेट कोडर। आई अश्यूम आप वाकई में एक पैशनेट कोडर हैं, जो भी आपका नाम है। और किलर नाइट साउंड्स लाइक अ टफ नेम, कूल गाय किलर नाइट, बट आई डू वांट टू नो योर नेम। But thank you to Passionate Coder, thank you to Killer Knight, thank you to Harpreet, to Ashutosh। और कौन थे हमारे साथ? आशुतोष के आगे एक और हमारे हार्दिक भाई नहीं आए। We had Killer Ashwin Arya, yes, Ashwin Arya। Thank you for your question and well दोस्तों, if you don't have any questions, allow me to wrap up this video, क्योंकि मुझे एक और वीडियो करना है अपने दूसरे चैनल के लिए, और उसके बाद मुझे 2 कॉल करने हैं, कुछ आईपीएल के बारे में बात करना है कुछ और क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि दोस्तों आज क्या 10 दिन में तो आईपीएल शुरू होगा। तो आई नीड टू प्लान आउट माय डे एंड दैट्स इट। 12 बजने को 2 मिनट है, अगले 2 मिनट तक मैं आपके साथ यहाँ जुड़ता हूँ, फिर मैं बाकी दिनों में। वरुण कुमार साहब, गुड मॉर्निंग टिंकू जिया। गुड मॉर्निंग वरुण कुमार साहब। किलर नाइट सर, आप अतुल प्रताप सिंह, आप आईपीएल टीम का रिव्यू करिए। बिल्कुल, आईपीएल के बीच तो मैं इतना बिजी रहूंगा, यहाँ पे cricket.com पे रहूंगा मैं, क्रिकेट नेक्स्ट पे रहूंगा, रपोसो और ग्लैंस आप पे रहूंगा मैं, और एक और क्लाइंट है, मैं भूल गया। हाँ, मेरे पास 5 अलग अलग लोगों ने मुझे काम दिया आईपीएल के बीच में। तो आई बी डूइंग अ लॉट ऑफ आईपीएल वीडियोस, तो प्लीज स्टिक अराउंड इस चैनल पे के कम्युनिटी वॉल पे मैं पोस्ट करूंगा अपने बाकी लिंक्स। हाँ, न्यूज 9 प्लस यूट्यूब चैनल, मैं वहां पे आऊंगा। तो आईपीएल के बीच हम सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के रिव्यूज, प्रीव्यूज, एनालिसिस, वीकली शोज भी करूंगा मैं। एक सैटायर शो करने वाला हूँ, फेक इंडिया भी चलता रहेगा। तो भाई बहुत 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 अतुल प्रताप सिंह, थैंक्स फॉर योर नेम। बहुत आईपीएल शोज होने वाले हैं, बस आईपीएल को शुरू हो जाने दो, फिर हम देखना। व्हाट वाज योर असेसमेंट ऑफ द बीजीटी पिच? भाई मैं 3 शोज कर चुका हूं इस बीजीटी पिच पर, तो दोबारा मुझसे वो मत कराओ भाई। मैं 3 शोज कर चुका हूं इसी पिच पर, बल्कि सॉरी, मैंने 6 या 7 वीडियोस आशुतोष किए थे इस पिच पर। लेट्स लीव द पास्ट, माजी को माजी रहने दो, लेट्स मूव अहेड। आई हैव डन अ लॉट ऑफ वीडियोस, आई डोंट वांट टू रिपीट माय सेल्फ। Abhishek Verma from Bangalore, lovely, yeah. So we have Abhishek Verma from Bangalore and we have Atul Pratap Singh। Love to see you guys comment here। Please आते रहिए वापस इस चैनल पर, सवाल पूछते रहिए, क्रिकेट को लेकर अपने व्यू शेयर करते रहिए मेरे साथ, क्योंकि आखिर ये वीडियोस मैं आपसे जुड़ने के लिए ही करता हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत तो बातें होती रहती है। मैं आई लाइक टू हियर माय ओन वॉइस एंड आई लव क्रिकेट, बट
Jokes aside, I do these videos because I like to interact with you guys and see कि आप लोग भी क्या सोचते हैं इंडियन क्रिकेट के बारे में, टीम सिलेक्शन के बारे में, मेरे बारे में। तो थैंक यू ऑल। बहुत बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स पढ़कर, आप लोग से जुड़कर। अभी आप मुझे प्लीज इजाजत दीजिए, मैं जाके दूसरे काम पे लग जाता हूँ। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर वीक, एंड आई विल सी यू वंस अगेन टुमारो, also on a live stream, maybe before or after the third ODI between India and Australia in Chennai. तब तक दोस्तों, take care, love you all, Jai Hind.